Hello friends, today our topic is expressing opinions and agreeing and disagreeing politely. It is the 17th day of 30 days English speaking course. Uh, we will learn about how to agree with anyone politely. Objective of the day: learn how to share your opinion clearly, practice politely ways of agreeing and disagreeing, use model sentences in small conversation. Giving opinion: in my opinion, I feel that. From my point of view, personally, I think. Agreeing: I completely agree with you. That's absolutely right. You have a point here. I couldn't agree more. Disagreeing politely: I see your point, but I think I am not sure I agree with that. That might be true, but I respect your opinion. However, sample number 1, sample dialogue. Situation: two friends are discussing online learning. दो फ्रेंड्स जो हैं वो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं. In my opinion, online classes are more flexible than traditional classes. I understand what you mean, but I think face-to-face classes are more effective. That may be true, but online learning saves time and travel. Yes, that's a valid point. Mini practice task. Then let us practice. प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में. पेयर एक्टिविटी किसी फ्रेंड के साथ. पहला टॉपिक है स्मार्टफोन्स आर मेकिंग लाइफ इजियर. Television is better than YouTube. These are two topics you have to discuss, you practice. One student gives the opinion, एक दोस्त जो है अपना ओपिनियन देता है और दूसरा एग्री करता है. देन सेल्फ प्रैक्टिस. लास्ट में अपने आप प्रैक्टिस करना अकेले. पिक ए डेली टॉपिक. इज रीडिंग बुक्स बेटर देन वॉचिंग मूवीज. कोई भी रोजमर्रा का टॉपिक उठाओ. स्पीक अलाउड योर ओपिनियन यूजिंग इन माई ओपिनियन. तेजी से बोलो अपने विचार के बारे में और अपने आप को रिकॉर्ड करो. एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ. देन रोल प्ले द अदर पर्सन बाय डिसएग्रीइंग पोलाइटली. फिर दूसरे व्यक्ति का रोल करें जो कि असहमत है लेकिन विनम्रता के साथ. डे समरी. आज हमने क्या किया? टुडे वी लर्न एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस एंड एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग पोलाइटली. Practice these phrases in real conversation to sound confident and respectful. अपने ओपिनियन बताओ सहमत होते हुए, असहमत होते हुए, विनम्रता से. इन फ्रेजेस को द्वारा प्रैक्टिस करो ताकि आप रिस्पेक्टफुल और कॉन्फिडेंट लगे. आज का होमवर्क: चूज 3 एवरीडे टॉपिक्स. 3 कोई रोजमर्रा के टॉपिक्स लो, चाहे फूड, चाहे स्टडी हैबिट्स, चाहे टेक्नोलॉजी. अपने आप को रिकॉर्ड करो. रिकॉर्ड योर सेल्फ गिविंग योर ओपिनियन
अपने विचार प्रकट करते हुए एंड रिस्पॉन्डिंग विद एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, और प्रतिक्रिया दो, चाहे सहमत होकर और चाहे असहमत होकर। That's all for today. Next, on the 18th day of 30 days English speaking course, I will bring the new topic for you. Thank you. Have a nice day.